Good morning, friends. So, before we start this prelims booster session, let me address an issue which was raised yesterday. Because there are some students, or rather many students, who are from Hindi speaking states. So, they were complaining that the video should be bilingual and they are unable to understand the topics in English. So let us do one thing. We can accommodate the concerns of both English speaking and non-English speaking students by doing a simple by using a simple formula. No, now what I will do is before starting any topic, like see this is mucormycosis. Now what I'll do is in the beginning I will explain this entire topic in a very brief manner in Hindi language to all the students who are from Hindi speaking background. Okay, so they will understand what the topic is, and then when they later this read this PDF or revise this PDF, they will be able to understand this topic. And for those of us who are from English background, they will continue to get the lecture in English, and I'll after the brief introduction of the topic in English, I will I'm sorry, in Hindi, I'll continue the entire topic in English itself, like we were doing in the past 2 days. Okay, so first of all, let me introduce this topic in Hindi to the Hindi speaking students. So the first topic is म्यूकोरमाइकोसिस. तो पहला टॉपिक है म्यूकोरमाइकोसिस. तो म्यूकोरमाइकोसिस को यूनियन गवर्नमेंट जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने कहा है कि स्टेट्स को कि आप इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दो अंडर एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897. तो अब इससे क्या होगा कि जब किसी भी डिसीज़ को आप एपिडेमिक डिक्लेयर कर देते हो इस एक्ट के अंदर, जो सिर्फ स्टेट्स कर सकती हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट्स का एक्ट है. इसको लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, बॉम्बे में इसको इम्प्लीमेंट किया था जब ब्यूबॉनिक प्लेग फैला था 1890s के एंड का जो टाइम था तब फैला था, तब इसको लेके आया गया था. और ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है. तो यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट्स को बोल सकती है कि आप इस एक्ट को इन्वोक करो और इस डिसीज़ को आप एपिडेमिक डिसीज़ डिक्लेयर करो, ठीक है. उसी के बेसिस पे आगे के जो है डिसीजंस लिए जाएंगे, जैसे कि जो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस देगी एपिडेमिक के रिलेशन में, वो सारी गाइडलाइंस उस डिसीज़ पर लगनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है. तो इसमें होगा क्या कि एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच में पूरे कंट्री में ये डिसीज़ को टैकल किया जा सकेगा, जो कि जिसको हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं. तो अब धीरे 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 आप देख रहे हो, कभी पंजाब कर रहा है, कभी चंडीगढ़ कर रहा है, कभी हरियाणा कर रहा है, कभी दिल्ली कर रहा है, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 सारी स्टेट्स जो हैं वो इसको अपने एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट में इसको म्यूकोरमाइकोसिस को एपिडेमिक डिक्लेयर करती जा रही हैं. तो अब इस एक्ट में क्या है कि सेक्शन 2 एम्पावर करता है कि स्टेट्स गवर्नमेंट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे असेंबली है या गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी गवर्नमेंट्स जो है वो एपिडेमिक डिक्लेयर कर सकती हैं किसी डिसीज़ को, और उसके लिए अलग अलग प्रोविजंस जो हैं वो फिर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है. और इसमें इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम में जो है डेटा डालना पड़ेगा, रियल टाइम डेटा. अब जैसे लास्ट मंथ हमने देखा था अप्रैल में कि इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया, जिसमें रियल टाइम डेटा डालते रहते हैं वो कि हाँ हम अब ये डिसीज़ ऐसी फैल रही है, अब ये यहाँ पहुँच गई है, इस स्टेज में पहुँच गई, इतने लोगों को हो गई, ये सारा डेटा डालते रहते हैं. और वो सारा इकट्ठा होकर डेटा पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल से जो है नेशनल लेवल पे पहुँचता है. तो उससे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नज़र रख सकती है कि कहाँ पर ये एपिडेमिक फैलता जा रहा है, ठीक है. सो यही इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम 2004 में निकाला गया था, ऐसे नज़र रखने के लिए कि एपिडेमिक्स कहाँ पर शुरू हो सकती हैं और कहाँ पर शुरू हो रही हैं. तो ऐसे ही जो है इस इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम से नज़र रखी जाती है, ठीक है. सो अब मैं इंग्लिश में इस पूरे टॉपिक को जो है वो कवर करूँगा. तो आप जो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं वो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं जब मैं नेक्स्ट टॉपिक को हिंदी में कवर करूँगा जब, ठीक है. सो now let's cover this topic in English. This mucormycosis topic, what is there in the news? The Union government has asked the states to declare this mucormycosis as an epidemic under the Epidemic Diseases Act 1897. So what will happen once the states start declaring this as an epidemic? There will be a coordinated approach, and
under the integrated disease surveillance program, the district level, state level, and national level coordination centers will coordinate with each other, and the epidemic will be handled in a coordinated manner. Okay, so what happens once the states start declaring this any disease as an epidemic, then they have to follow a a, a phased or a coordinated response that is like we have seen, like ICMR starts giving guidelines which all states will follow for that epidemic, for that concerned epidemic. Like if we take the example of corona, we had declared it as an epidemic in March 2020. Once all states declared it, then ICMR stepped in and it started giving guidelines. Home Ministry started giving guidelines, and all central government machinery started giving guidelines to states, and states started giving the same to district level. Okay, so for a coordinated response, it becomes essential that a disease is declared epidemic under the Epidemic Disease Act 1897. So let us see about this act. This act was enacted by British when the bubonic plague uh, was prevalent in Bombay, in the state of Bombay. There was no Maharashtra then; it was the Bombay province. And when in the late 1890s, this act was enacted. Okay, so basically, it is a state governments act. Only the state governments or the union territory governments are empowered under Section 2 to invoke this act and to declare any disease as an epidemic. Okay, after the state declares a disease as an epidemic, it becomes empowered to uh, lay down the guidelines and impose penalties for disobeying any regulation that the states governments or even central government, basically state government makes regulations based upon the guidelines of national government. And once a disease is declared as an epidemic, the states start imposing some rules, and disobedience of such rules will invite penal action under the IPC section 188. Okay, so there are some different penalties, like 6 months imprisonment and 1,000 fine, or both, in case of a person avoiding or disobeying a civil servant or a government servant, basically, in case of of any rule that the civil servant or the government servant wants to impose on common people. Okay, so uh, let's see what is integrated disease surveillance program. Once this mucormycosis will be declared as an epidemic, the states will be the medical staff, it will be mandatory for the medical staff to update all the reports to the health department and to the integrated disease surveillance program. So now let's see what is integrated disease surveillance program. It is basically launched by the it was basically launched by the health ministry in assistance with World Bank in the year 2004. It was initially, it was supported by the World Bank, but during the 12th five-year plan, it was supported by a domestic budget. World Bank did not give any assistance. It was being funded through the National Health Mission. Okay, so under this, a central surveillance unit has been established at Delhi. A state surveillance units are established in the respective states, and there is also a provision for district surveillance units. So now what it does is that if let's see an example. See, if there is a small district in or a small village in Haryana. So if a certain type of disease starts there, which has the potential to become an epidemic, the district surveillance unit will report these will collect all the reports about that disease, and it will update the state surveillance units. Now state surveillance units will update the central surveillance units. So there is a three-tier structure, so as to keep an eye over any potential epidemic. And now last month we covered this in prelims booster only, that the government has also launched integrated health information platform, under which the informations that are to be shared, they are being shared
on a real-time basis. Under the Integrated Disease Surveillance Program, the information was being uploaded or data was collected on a weekly basis, but now this has been changed to a real-time basis under the Integrated Health Information Platform, which was launched last month in April. Okay, so this is Integrated Disease Surveillance Program. Basically, uh, it aims to decentralize laboratory-based and IT-enabled disease surveillance systems so that the governments, both at the state and the central level, can keep a close eye over any disease which has the potential to become an epidemic in the near future. Okay, so now let's see the next topic, which is MyLab CoviSelf. So now I'll start speaking for the Hindi speaking students. I'll just brief this टॉपिक इन हिंदी नाउ. तो आईसीएमआर ने माई लैब कोविसेल्फ जो है उसको अप्रूव कर दिया है. वो एक बेसिकली होम टेस्टिंग किट है. आप घर पे अपने आप को कोरोना चेक कर सकते हो. ये एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है. रैपिड एंटीजन टेस्ट आपको पता है ना क्या होता है. नाक में आप जो है वो स्वैब डालते हैं. आप नहीं डालते मतलब चलो हॉस्पिटल में जब आप करवाते थे तो नाक में वो आपके स्वैब डालते थे और फिर जो है सिर्फ नाक से ही वो सैंपल्स लेते थे और 15 मिनट में बता देते थे कि आप पॉजिटिव हो या नहीं हो. ठीक है. अब उसकी लिमिटेशन क्या है कि रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है उसमें पॉजिटिव तो सही आता है लेकिन नेगेटिव कई बार सही नहीं आता. मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव हो, मतलब उसकी जो नेगेटिव टेस्ट देने की जो उसकी क्षमता है वो सही नहीं है. पॉजिटिव तो वो सही देता है, मतलब अगर आपको कोरोना है तो और उसमें आ गया कि कोरोना है तो आपको सच में ही है. लेकिन आपको अगर नेगेटिव टेस्ट आया आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव हो सकता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आपको पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको आरटीपीसीआर कराना ही पड़ता है. बेसिकली रैपिड एंटीजन टेस्ट उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर वाले लोग हैं, जो हमेशा कोरोना के पेशेंट्स के आसपास घूमते रहते हैं या उनको वो किसी कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं. तो उनको जब ये पता करना होता है कि वो क्या पॉजिटिव हैं या नहीं है तो उसके लिए ये टेस्ट जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है. तो अब इसको घर पर भी आप कर सकते हो. उसके लिए माई लैब कोविसेल्फ नाम से जो है वो किट जो है वो जो आईसीएमआर ने अप्रूव कर दी है. ये 250 रुपये की सिर्फ किट है. 15 मिनट में आप खुद अपने जो है वो नाक से सैंपल लेके आप टेस्ट कर सकते हो कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नहीं. ये बेसिकली उनके लिए है जो कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं. जैसे कि अगर आपकी फैमिली में कोई किसी को कोरोना हो गया है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि मैं घर बैठा हूँ और मुझे मतलब वैसे ऑफ कोर्स आई कैन बाय दिस किट, सिर्फ 250 रुपये की किट है, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि सिर्फ वो लोग इसका यूज़ करें जो अभी जो हाई रिस्क में है या फिर वो उनके सिम्टम्स आने शुरू हो गए, उनको लग रहा है कि उनको कोरोना है. ठीक है. ऐसे घर बैठे आपको चेक करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मैंने आपको जैसे बताया कि पॉजिटिव अगर आ गया है इसमें, अगर आपका इसमें टेस्ट पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव तो सही बताता है, तो आपको माना जाएगा कि हाँ आप पॉजिटिव हो. आप खुद ही अपने एक मोबाइल ऐप के थ्रू जो है वो अपना सारा डिटेल्स फिल कर दोगे. फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो फॉलो करना शुरू करेंगी और आपको जो भी वो दवाइयाँ देने आते हैं घर पे, सैनिटाइजेशन करने आते हैं, वो सब करना शुरू करेंगे. ठीक है. अब ये जनरलाइज स्क्रीनिंग के लिए नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती इसका, क्योंकि गवर्नमेंट जो है माई लैब जो ये कोविसेल्फ जो है वो आपको घरों में बांट रही है और आप नॉर्मल सिचुएशन में जो है लोग अपना घर में टेस्ट कर जा रहे हैं. सिर्फ उनके लिए है ये जो जैसा मैंने आपको बताया जिनके पास सिम्टम्स आ गए हैं, जिनके घर में किसी को कोविड है या फिर वो किसी कोविड से समझ लो जैसे हेल्थ लाइन डॉक्टर वाले जो है वर्कर्स हैं, उनके लिए ये बेसिकली बनाया गया है. ठीक है. अब अगर इसमें एक और चीज़ है कि जैसा मैंने आपको बताया कि नेगेटिव रिपोर्ट इसमें कई बार सही नहीं देता है. तो क्या होगा कि अगर आपको सिम्टम्स आए हुए हैं लेकिन आपका ये जो माई लैब कोविसेल्फ जो है जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो कह रहा है कि नहीं आप नेगेटिव हो, तो आपको जो है अंडरगो करना पड़ेगा आरटीपीसीआर टेस्ट, क्योंकि उसी से ही पता लगेगा कि आपका असल में पॉजिटिव है या नहीं है. ठीक है. तो नेगेटिव इसके अंदर आना जो है वो कोई आपको लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है. जब तक आप आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराते तब तक आप श्योर नहीं हो सकते कि आप सच में नेगेटिव हो. ठीक है. अब इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स और इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं कि बहुत आसानी से अब आप घर पे ही जो है वो टेस्ट कर सकते हो. आपको लैब में नहीं जाना पड़ेगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बाहर एक्सपोजर नहीं हो, लैब में जाके आप किसी और से बीमारी ना ले आओ. इससे
अच्छा आप घर पे ही कर लो इसको, ठीक है। फिर लेबोरेटरीज के ऊपर जो बर्डन है, उनको बेचारों को इतने टेस्ट करने पड़ रहे हैं, इतने 24 घंटे टेस्ट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होगी है, तो उनके ऊपर से बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन रिलायबिलिटी का एक इशू इसके अंदर रहेगा कि आपने खुद जो है वो सैंपल सही कलेक्ट किया है या नहीं, इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है। तो अब मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, सो जस्ट वेट कि आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप अपना हिंदी वाले वेट करें, ठीक है। So let us see this topic in English now. So this MyLab CoviSelf is a basically a self test kit. It is a rapid antigen test kit. So what was we have already covered the rapid antigen test. Basically, it is a test in which you take, rather the health line the health worker takes your nasal swab, takes a nasal swab and takes out a sample from your nose and tests it and gives you a result in 15 minutes only. Okay, so what is the how is it different basically from RT-PCR? Rapid antigen tests are very efficient in giving positive results, but they are not efficient in giving negative results. How? If, for example, I am tested negative in the rapid antigen test, it is not an assurity, it is not sure that I will not be sure, because rapid antigen tests are not efficient in giving the uh, negative result. Okay, if you have a virus, it will definitely give you a positive result. So if the rapid antigen test is giving you a positive result, then you are sure that you are a positive COVID patient. Okay, if it is giving you a negative result, you cannot be sure that you are negative, because there is a chance, because there are the errors, or the error margin in this case, in this rapid antigen case, is very rapid antigen test case is very high, and you can only be confirmed that you are negative by undergoing a RT-PCR test, which is the gold standard test in COVID testing. Okay, so this MyLab CoviSelf is a rapid antigen test kit, and it helps you get quick results. You get the result in just 15 minutes, like you get in a hospital when you go for a rapid antigen test. So this kit has been approved for home use, and it is giving you a nasal swab sample uh, kit, under which you will take a sample of your from your nose. It's a very simple swab. You don't need to very high expertise to collect the sample. It is a very simple swab, and you can get yourself tested, and the results will be out in 15 minutes. So basically, it is launched for those people who have symptoms or who are high risk contacts of positive patients. So if in case someone in my family is tested positive, I can use this test. Or if I have developed some symptoms which are normally developed in a COVID patient, then also I can use this test. It is not advised for general screening. Okay, so what it means is that government cannot, the state governments or the district authorities cannot just distribute this home test kits to people and ask them to get tested. Okay, so for them there will be RT-PCR test. It is just for you, for you, so that you can get yourself tested at the comfort of your home. Basically it has been launched so that the burden from the laboratories can be reduced, because many times there are people who have some symptoms, of course, but they are uh, uh, they are just using the resources of the government. So government wants them to get themselves tested at the home, at their home. Okay, so as I said earlier, if you get tested negative in this rapid antigen test or this CoviSelf test, it does not give you a guarantee that you are negative. You will have to undergo an RT-PCR test. So the ICMR guidelines are saying, if you're getting a positive test, then definitely you are positive, and you will have to upload your data, your address and your phone number and all that, to this app, which will come in this
which will come in this test. Okay, there will be a link which from where you can download this app, and then you can upload your data. After that, state authorities or district authorities will come at your home, and they'll give you the medicines or the kit, and they'll sanitize. All the protocols of a COVID patient will be followed with you. Okay, so what are the arguments in favor and against this testing? uh, the swab collection is very simple as compared to an RT-PCR testing. So it will reduce overall testing expenditure. It will also reduce the burden on laboratories. Now the people who are high risk contacts or who have developed some symptoms, they need not go to the laboratories to get themselves tested. They can get themselves tested at the comfort of their home. And but of course there is a reliability issue. As I've told you earlier, this test kit does not give a good negative result. The margin of error is very high in giving a negative result. So also there is also a possibility that you would not be able to use it correctly, and you would fail to get the sample correctly. So in that case also, you will not get a verifiable or a good result. Okay, so these are the advantages and disadvantages of this test. So now let's see the Iceberg A76. सो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने एक स्पेनिश आइलैंड जो मेजोर्का है उससे भी बड़ा एक आइसबर्ग जो है वो टूटते हुए जो है उस अंटार्कटिका में से जो है उसको देखा है, और कहा है कि वो वेडल सी जो है अंटार्कटिका में वो वहाँ पर जाकर जो है वो तैर रहा है. ठीक है, तो इसको कहा गया है, इसका नाम रखा गया A76. इसको कॉपरनिकस सेंटिनल-1 जो यूरोप की स्पेस सैटेलाइट है उससे इसको कैप्चर किया गया है. देखा है उन्होंने कि हाँ ये टूट चुका है वहाँ से, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग है. इससे पिछला जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का आइसबर्ग था वो था A23A. अब उसके बाद जब ये टूटा है तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग बन गया, और ये अभी भी वेडल सी में जो है दोनों है ये फ्लोट हो रहे हैं. ठीक है, अब इसमें कंसर्न क्या है कि हमारा जो है अंटार्कटिका है वो बहुत जल्दी जो है वो वार्म हो रहा है, तो हमारे रेस्ट ऑफ द प्लेनेट के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे पानी का लेवल बढ़ जाएगा. हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बाढ़ आने शुरू हो जाएं. कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो तो शायद गायब ही हो जाएं, क्योंकि पानी का अगर लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे अंटार्कटिका से आर्कटिक से जो है ये आइस कम होती जाएगी, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, so let's see this Iceberg A76 topic. The European Space Agency's Copernicus Sentinel-1 space satellite has captured the image of an iceberg which is bigger than the Spanish island of Majorca. It has been sheared off from the Antarctican frozen edge, and it is now floating in the Weddell Sea. Okay, so earlier the biggest iceberg that shelved off from Antarctica was A23A. Now after this A76, this new iceberg, this A76 iceberg has now become the biggest iceberg which is floating in the sea now. Okay, so both of them, A23A and A76, both of them are floating in the Weddell Sea. Now what is important in this topic is Weddell Sea. You have to see the location in the map also. They can ask you a question about Weddell Sea also. Okay, so Weddell Sea is located near Antarctica. You have to see that in your map. Now the biggest concern is that Antarctic ice sheet is warming faster than the rest of the planet, and in case the Antarctic ice starts melting very fast, then the oceanic water will increase. It will be very difficult for our island countries to maintain themselves. They can also get flooded. Our low-lying states or our low-lying coastal states of India, or basically rest of the world, they will also be at risk, because if the water level in ocean increases, we will be facing a very challenging we will be facing very challenging times. And this Antarctic ice is a repository of many viruses. Similarly, Arctic also.
many viruses are stored there. So if all of this Antarctic and Arctic ice starts melting, though all those pathogens will start coming out, and we'll have more diseases, which we are fearing that due to global warming in the next 2 or 3 decades we will have more diseases, and will have to encounter more diseases like corona, because these pathogens will come out in the open. Okay, so this Antarctic iceberg, which is A76, which is the biggest iceberg floating in the Weddell Sea right now. This was in top news after the European Space Agency captured images of this iceberg floating in the Weddell Sea. Okay, now let us see the next topic, which is corpse flower. तो ये कॉप्स फ्लावर जो है, ये यूएस में सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में इसको रखा गया है. ये असल में सुमात्रा जो है आइलैंड, जो रेन फॉरेस्ट है सुमात्रा के, वहाँ पर जो है इंडोनेशिया में पाया जाता है. इसका ये एक बड़ा अजीब सा ये साइंटिफिक नेम है, एमोर्फोफेलस टाइटैनम. ठीक है, अब ये सिर्फ 10 साल के अंदर जो है ये 10 फीट जो है वो बड़ा हो जाता है. और इसको हम कॉप्स फ्लावर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से जो स्मेल आती है वो ऐसा आती है जैसे कि कोई जो है वो कॉप्स में से स्मेल आती है, किसी डेड बॉडी में से स्मेल आती है. ठीक है, इसका कॉम जो है, कॉम क्या होता है, आपने देखा होगा ना, जैसे कि आप प्याज का पौधा देखते हो या आप आलू का पौधा देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि नीचे जो है वो बिल्कुल एक स्टोरेज का वो होता है, मतलब कि पहले ऊपर जो है वो उसकी जो है वो जिसको हम कहते हैं स्टेम, वो होती है. नीचे उसका जो बहुत बड़ा ऐसे गोल सा या फिर किसी भी शेप में हो सकता है, वो उसके अंदर उसमें प्लांट जो है वो अपनी स्टोरेज करता है, वो स्टोरेज ऑर्गन होता है उसका. तो वो जो स्टोरेज ऑर्गन है वो इस कॉप्स फ्लावर का बहुत बड़ा होता है, वो 100 केजीज तक का हो सकता है. ठीक है, और इसका जो लाइफ स्पैन है इस कॉप्स फ्लावर का वो बेसिकली 3 से 4 डेकेड होता है, मतलब 30 से 40 साल तक ये जिंदा रहता है. ठीक है, इसको कॉप्स फ्लावर क्यों कहते हैं, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, जैसे कि कोई मीट जो है वो रॉट हो गया हो, सड़ गया हो, या फिर कोई जो डेड बॉडी है उसमें से जैसी स्मेल आती है वैसी सी इसमें स्मेल आती है. और वो कब आती है, जब ये फ्लावर जो है वो खिलता है, जब वो ब्लूम करता है 10 साल बाद, हर 10 साल बाद. ठीक है, तो वो क्यों स्मेल आती है, क्योंकि डेमाइथिल ट्राइसल्फाइड उसकी वजह से जो है वो इसकी स्मेल आती है. और ये स्मेल ऐसी होती है जैसे कि कैंसरस वुंड्स होती हैं जो उसमें से स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ वेजिटेबल्स जब खराब हो जाती हैं उसमें से जब स्मेल आती है, तो उसमें भी ये डाइमेथिल ट्राइसल्फाइड होता है, उसकी वजह से ये स्मेल, इसमें गंदी सी स्मेल आती है कॉप्स फ्लावर में से. ओके, so now this corpse flower has been in use. The US San Francisco's Bay Area has displayed this corpse flower, and people are people are seeing it, people are clicking photos of it. So now let's see what is corpse flower. So this flower is a native to the rainforests of Sumatra in Indonesia. Its scientific name is Amorphophallus titanum. This flower basically grows almost up to 10 feet in just 10 years. Okay, so what is unique about this is that they have a fleshy underground plant stem, and this corm, this what is corm is, the corm is the storage organ of a plant. You may have seen that in potatoes or onion also. Okay, there's a after the stem ends there is an organ, or like it can be circular, or it can be, basically it's a storage organ, and in which the plant stores all its energy or all its nutrients. And in this corpse flower, that corm or the storage organ is very huge, and it almost weighs almost 100 kgs in some cases. Okay, so what is unique about this flower is that it has a very pungent smell. This, what is the meaning of putrid stench? Putrid means pungent and stench means smell. So why this flower is releasing that pungent smell? Because it is releasing it because of dimethyl trisulfide. So it releases a certain kind of pungent smell which you see in which you observe basically in rotten meat or in a decaying cadaver. What is a cadaver? It's a corpse. So the kind of smell that you get from a decaying
corpse or a dead body, the same kind of smell this plant also releases when it starts blooming. It blooms every 10 years, and it has a lifespan of 3 to 4 decades. So it blooms every 10 years, and whenever it blooms, it gives a very pungent smell. So they are showcasing this plant in this flower basically in San Francisco, and people are gathering outside that area and take a glimpse of that flower. Okay, so now the next topic is INS राजपूत. तो INS राजपूत जो है वो सबसे पहला डिस्ट्रॉयर है, फर्स्ट डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी का, इसको सबसे आगे चलता था, ये आपने देखा भी होगा। ये लीड शिप था, इसको डी कमीशन किया जा रहा है, 21 मई 2021 को इसको डी कमीशन कर दिया गया। और ये लीड शिप था काशिन क्लास डिस्ट्रॉयर्स का। इसको जो है यूक्रेन, जो अब यूक्रेन है, पर वो तब सोवियत यूनियन का निकोलेव होता था, वहाँ पर इसको बनाया गया था। इसका नाम रशियन नेम था नेडेज़नी, जिसका मतलब हुआ होप। इसको 1977 में लॉन्च किया गया था, और इसको 1980 में उस टाइम जो हमारे एम्बेसडर होते थे सोवियत यूनियन में, के गुजराल जी, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, कमीशन किया था जॉर्जिया में 1980 में। ठीक है, सो INS राजपूत वॉज the first destroyer of Indian Navy. It has been decommissioned on 21st May. Okay, it was the lead ship of Kashin class destroyers. It was constructed in the erstwhile Soviet Union. Okay, in the city named Nikolaev, which is now present in Ukraine. The original name of this INS Rajput was the Russian name Nadezhny, which meant hope. It was launched in 1977, and it was commissioned by Shri I.K. Gujral, who later on became the Prime Minister of India. He was then the ambassador to the Soviet Union in 1980s. He commissioned this INS Rajput at Georgia. Okay. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ वाइट फंगस। सो वाइट फंगस को देखते हैं। वाइट आफ्टर ब्लैक फंगस जो है, अब वाइट फंगस के कुछ केसेस हमको पटना में, बिहार में देखने को मिले हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ये आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, आपकी किडनी को, ब्रेन को, प्राइवेट पार्ट्स को अफेक्ट करता है। लंग्स को जब ये अफेक्ट करता है तो आपको कोविड की तरह इन्फेक्शन करता है, उसी की तरह सारे सिम्टम्स होते हैं, सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन लेवल कम होना एंड ऑल दैट। ऑफकोर्स उसके अंदर जो फेटेलिटी रेट है वो कोविड से बहुत ज़्यादा है, आपको इवन ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेडली है। ठीक है, कोविड जैसे सिम्टम्स आपको इसमें आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि आपका तो कोविड टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि ये वाइट फंगस हो, तो ये सिर्फ सिटी स्कैन या फिर एक्सरे से ही पकड़ा जा सकता है। आपके नेल्स को, स्किन को, स्टमक को, अदर बॉडी पार्ट्स को ये अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और ये बेसिकली क्यों होता है, जब आपकी लो इम्यूनिटी होती है। और खासकर क्या होता है कि जब हम कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो हम उनकी इम्यूनिटी को स्टेरॉइड से जो है वो आर्टिफिशियली कम कर देते हैं। जब उनके हम इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, फिर अगर वो ऐसा कोई पानी पी लेते हैं, या वो ऐसा कोई किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसके अंदर इसके वाइट फंगस के मोल्ड्स हैं, तो वही वाइट फंगस को कांटेक्ट कर लेते हैं और वो जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, so this white fungus has been in news because some cases were reported in Patna in Bihar, and it affects, this white fungus is even deadlier than black fungus, mucormycosis. This white fungus affects your lungs along with other body parts, of course, like kidney, brain, private parts, etc. When it infects your lungs, it gives you similar uh, symptoms like that of COVID infection. Okay, so you start assuming that you have COVID, and then you get yourself tested for COVID, but when you're, of course, you don't have COVID, so your COVID test gets negative, and you're confused that what else is there, because you cannot breathe, your oxygen level is going down. So only after a CT scan or an X-ray you can get tested yourself for white fungus. Okay, so it impacts your nails, skin, stomach, and other body parts. It is basically caused due to the same reason from which we are contacting black fungus, that is low immunity. So what is happening is that during the treatment of COVID, our doctors are giving or prescribing us some steroid containing drugs, and these steroid containing drugs are artificially lowering down our immune system. So once we recover from COVID, even when we go home,
we have low immunity. So once we consume anything like water, of course, which contains molds from white molds of white fungus, we get infected of it, and then we get this white fungus. It is more deadlier than black fungus. So that is this is a new problem. We are not we are having a new problem after COVID. We got black fungus. Now this new uh, white fungus disease is creeping upon us. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday. Until then, goodbye and take care.